everyone. I hope all of you are great. मैं कुछ great feel नहीं कर रही हूँ because of yesterday's travel, but anyway, this is just part and parcel of life. So this doesn't stop here. So आज फिर से मैं prepare कर रही हूँ for my second trip, which will be to hills, and that is the whole purpose. मैं क्यों इस unplanned trip में दुबई से कोलकाता आई. So this is the whole purpose that we are going to hills, and although this will be a short trip to hills, जगह मैं बाद में बताऊंगी. I'm very excited because of three reasons. One is this is a hill station. I love going to hill stations. Secondly, this will be by train. And thirdly कि मैं माँ बाबा के साथ ट्रैवल करूँगी, who are my in-laws, और माँ के कुछ relatives रहते हैं हिल स्टेशन में, and that's when I'll be going there. And third reason जो मैंने बताया, yes, I will be meeting them for the first time, इसीलिए और ज़्यादा excited हूँ. So preparation start हो चुका है trip का, because we really have less time. माँ अभी लूची और आलू दम बना रही है, जो is my favorite. Yeah. और एक रीज़न है, the fourth reason for me being so happy to go on this trip. So लूची और आलू दम का प्रिपरेशन देखते हैं, and also I have to certain little bit of packing जो फ्लाइट में ज़रूरत नहीं पड़ती है, like एक्स्ट्रा सैनिटाइज़र. और मैं ट्रेन से शायद ऑलमोस्ट लाइक ईयर्स के बाद ट्रैवल करूँगी, सो थोड़ा सा तो एडिशनल कुछ करना पड़ेगा. सो अभी मैं लूची और आलू दम देखने जाती हूँ कौन से स्टेटस में है. सो लूची और आलू दम बन के रेडी हो गया है और माँ इसको इंडिविजुअल बॉक्सेस में पैक कर रही है. दिस रियली लुक्स यमी एंड आई कैन नॉट वेट टू ईट दिस. While everything was happening, बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश भी हो रही है, और मैंने ऊबर बुक कर लिया है, लेकिन that should reach on time. But ये बारिश देख के लग रहा है कि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने वाली है, so we leave little early. So our taxi arrived on time, so वो एक अच्छी बात हो गई. तो हम पहुंच गए हैं शियालदा स्टेशन, जहां से आज हमारी ट्रेन निकलने वाली है. ये स्टेशन काफ़ी पुरानी है, which was established in the year 1862, और इस स्टेशन की फुटफॉल भी काफ़ी अच्छी है. सो इट इज़ अ बिजी स्टेशन बिकॉज over 1.2 million passengers every day इस स्टेशन से ट्रैवल करते हैं. सो ट्रेन निकल के 1 घंटा हो गया स्टेशन से. इट वॉज एट 8:30. सो हमने डिनर भी स्टार्ट कर दिया. डिनर में आप देख रहे हो कि यस, लूची और आलू दम तो है ही, उसके साथ आइसिंग ऑन द केक भी है, विच इज द रसगुल्लास.
So the next day morning, हमने चाय खरीदी, ब्लैक टी फ्रॉम अ चाय वाला who was already there in the train. उसके बाद हम वेट कर रहे थे शिलीगुड़ी जंक्शन आने का क्योंकि the chai was not satisfactory that we had in the train. So उसके बाद हम मैंने और बाबा ने उतर के वहाँ से चाय खरीदा. So जैसे ही शिलीगुड़ी जंक्शन से स्टेशन ट्रेन निकलती है, you can just start enjoying the view. So हम जा रहे हैं कालिम्पोंग, a place in a Kalimpong district in North Bengal. So हमारी डेस्टिनेशन स्टेशन है न्यू माल जंक्शन जो हम पहुंच गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन में which is गुरु पठान and we will go there by drive through Mama's car. খাবার জল এই अच्छा अच्छा ड्रिंकिंग वाटर এদের লাইফটা খুব কঠিন লাইফ খুব কঠিন লাইফ। হাজিরা নাই হ্যাঁ 200 টাকাও হাজিরা নাই সে কথাই বলছি, এই চায়ের গন্ধ পাচ্ছ না? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা চা বাইরে বেরিয়ে আছে। চায়ের গন্ধ হ্যাঁ 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 পেয়েছি এইটা চা। এইসব স্টুডেন্টরা দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝেছো? এইসব স্কুল গাড়ি আসবে বা কোনো কিছু আসবে, এইসব এই দেখো আজ মেয়েরা পড়াশোনা করতে সব স্কুলে, এরাও হেঁটে হেঁটে কম স্কুল করে। So मामा के घर में घुसते ही we had this beautiful garden which I'm always fond of और वहाँ पे हमने breakfast भी किया मामा के घर पे which was really tasty and finally after the breakfast we finished it with a flavorful black tea which was very refreshing.